जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदशुभदशतथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अस्तु शिवसङ्कल्पः। प्रथम स्वस्ति वाचनं कुर्यात्। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं पयः पृथिव्यां पयो खदिषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। ओं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वत्रयस्थो विष्णोः शूरसि विष्णुध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्वा। ओं अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओं विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभजद्भद्रं तन्न आशुभ। इमा रुद्राय दवसेकप्रतिनिच्छयद्विराय प्रवरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम्पुष्टाङ्ग्रामे स्मन्निनातुरम्। ॐ एतन्ते देव सवितर्यज्ञप्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मावः। ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतामजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोतरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठ एक वै। ओम एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यज्ञन्ते सर्वमेवं प्रतिष्ठितां भवति। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमातमजासि गर्भदम्। ओं नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तभो नमो नमो गृह्येभ्यो गृषपतिभ्यस्तभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तभो नमः। ओं सुमुखस्यैकगन्धश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यवडे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। ओं उमामहेश्वराभ्यं नमः। ओं वाणीरनिगर्भाभ्यं नमः। ओं सच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ओं मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओं इष्टदेवताभ्यो नमः। ओं कुलदेवताभ्यो नमः। ओं ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओं स्थानदेवताभ्यो नमः। ओं वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओं सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इति स्वस्ति वचनं। प्रथम गणपतिध्यानम्। ओं गं गणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्यमहादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमो वृत्तिभद्राय नियतां नृदासुदां भगवते श्रीगौरीगणेशाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि गणपतये नमः। गौर्यै नमः। स्नानम्। ओं वाजर्वाद्यं समर्पयामि हस्तवर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि गणपतये नमः। मिलितोपचार पंचामृत स्नानं पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे ववसरेत पंचामृतमयानीतं वयोदधिघृतं मधु शर्कराच समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीगणपतये नमः। ओं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालमणिबालस्तस्मै शेताः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय वस्वतये कर्णायामावलिप्ता रौद्रनमो रूपाः पार्जन्यः गङ्गे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि। ओम
जुबासुबासा परिवेताघसौ श्रेयान् भवति जायमानतं धीरास कवयोन्नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् औरुवारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भगवते गङ्गणपतये नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ओम त्वां गन्धर्वाखनस्तां इन्द्रस्ता बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मुराजिविद्वान् लक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृहतां चन्दनानुलेपनानान्ते कुङ्कुमं समर्पयामि गन्धद्वारां दुर्दासां नित्पुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपवै श्रियम् अक्षण्यमिव वदन्त्य जवप्रिया दुःखदस्तोखदस्वाभानुपविप्रान्विष्टयामतिजोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि बिल्मपत्रं नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वर्धिने च नमः श्रुताय श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं जर्धायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्मं प्रतिगृहतां नाममन्त्रेण अर्चनाम् ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्ननाशाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ गङ्गणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि ॐ धूरस्य धुर्वधुर्वन्द्यं धुर्वदं जस्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामस्य वह्नितमघुंसस्नितमं वप्रितमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां भगवते गङ्गणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि नैवेद्य अभावे पुष्पाणि समर्पयामि नाभ्यासिदन्तरिक्षगं शिष्णुर्देवः संवर्ततपद्भ्यां भवमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकामकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलानि समर्पयामि यत्पुरुषेण विखादेवाय नमः तन्वतव सन्तोषासिदाजङ्ग्रेह्मैद्वः शरद्भविः भगवते श्री गङ्गणपतये नमः। भाद्रपाद्यं समर्पयामि अस्तुवर्गं समर्पयामि मुखे आचमनीं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकाशिदसदाधारप्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः द्रवदक्षिणानान्ते कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते गङ्गणपतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गङ्गणपतये नमः। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि प्रार्थना ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं धृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्याम् अवस्तातात् अवरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तज्जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्तुत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वरपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धाम् एतत्मनुस्वरूपां गकारपूर्वमरूपाम् अकारमध्यमरूपाम् अनुस्वारसान्तरूपां बिन्दुरुत्तररूपां नादसन्धानं सहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः नेतृगायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणां हृदयं च वरदं हस्त्रैः बिभ्राणं शकध्वजां रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतां च शिष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बर नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगवते गणपतये नमः इति ध्यानम् अनेन पूजनेन श्रीगणपतिदेवता प्रियन्तां नमः बोलिए गणपति भगवान की जय। वरुणदेवता पूजनम् ओम नमो ओम वर्णस्योतं मनमसि वर्णस्कं सर्जनिस्तो वर्णसरितसदन्यसि वर्णसरितसदनमसि वर्णसरितसदनमसि वर्णसरितसदनमासीद ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले स्तुष्टस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चन्द्रभागा सरस्वती ऋग्वेदयजुर्वेद सामवेद धर्मण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता ध्यानं समर्पयामि आसनं समर्पयामि आवहनं समर्पयामि भगवते वं वरुणाय पांपतये नमः स्नानम् ओम वाजुर्वाद्यं समर्पयामि हस्तर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि भगवते वं वरुणाय नमः मिलितविचार पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोदश सरस्वती तु पंचदासो देशे ववत्सरेत पंचामृतमयानितं वयोदधिघृतं मधु शर्करा समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहदां भगवते वं वरुणाय पांपतये नमः चन्दनानुलेपनं द्वाङ्गन्धर्वाखनस्तमिन्द्रस्तावृहस्पतिः त्वामोखदिशो मुराज्विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृहतां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षदान् समर्पयामि अक्षन्यमिवदन्ति जवप्रिया दुःखतस्तोखतस्वाभानुभविप्राणविष्टयामति जो जान्विन्द्रते हरि अक्षदान् समर्पयामि बिल्मपत्राणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचितसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपांपतये नमः ओम अक्रवाहनाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पाशस्ताय नमः ओम अनर्कमणिभूषणाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि वं वरुणाय पांपतये नमः धूपमाग्रापयामि धूरस्य धुर्वधुर्वञ्जं धुर्वदं ज्योत्स्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानां शिवनितमगुं षष्टितमं बप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यजायत श्रोत्राद्वायुस्तप्राणस्य मुखादग्निरजायत वं वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि अभावे पुष्पाणि समर्पयामि नाभ्यासिदन्तरिक्षगों श्रेष्ठोर्देवः संवर्ततपद्भ्यां भवमृदिशा श्रोत्रान् तथा लोकाम् अकल्पयन् पुङ्गिफलानि समर्पयामि इलादिचूर्णं समर्पयामि
ॐ यत्पुरुषेण विखादेवाजनमतन्वदवसन्तो शास्त्राजङ्ग्रेक्ष्मैद्मः शरद्ववेः द्रवदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतसजातः पतिरेकासीद सदाधारप्रतिविद्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः द्रवदक्षिणानान्ते कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वं वरुणाय पाम्पतये नमः कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते वं वरुणाय पाम्पतये नमः सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः अनेन पूजनेन श्रीवरुणदेवता प्रियंतां नमः बोलिए वरुणदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। चंद्रावतंसं रत्ने कल्पित वक्रं त्रिनेत्रं देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् समर्पयामि नमः आवास नमः पादयामि नमः अर्घ्यं समर्पयामि नमः समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि नमः सदाशिवाय नमः नमः पृथिव्यां पय ओषधीषु तरिक्षे पयोधाः पयस्वते प्रधिशा सन्तु मह्यं सदाशिवाय नमः
पयोदधीकृतं मधु शर्करा समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां मतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृदयं या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्तर्विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्तां प्रथमो देव्योऽभिषक अहीगश्च सर्वा आञ्जम्बयन् सर्वा आसयातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशागुं धेदयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यहम् उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमभयोराट्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषुधे निशील्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अणेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातथाय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाव्यभ्यो जिघ्घागुंसभ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषिमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो शपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तर्गुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जेष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च चुप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाचिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापकल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः स्खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आसुसेनाय चासुरथाय च नमः सूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिने च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निचङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवार्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गस्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमोपगुरमानाय च अभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किलिकेभ्यो देवानागुं नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृतजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने एकशजद्वीराय प्रभरामहे मथिं यथा न समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृदानो रुद्रोतनो मयस्कृधीक्षजद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मरुडाय जे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मान अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते
आराते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यता च नः सर्म यच्छति बर्हा आह स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहर्नुमुग्रं मृदा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेना आह परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तु नुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृदय मीढुष्टमशिवतमा शिवो नः सुमना भवां परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मिन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्र अधिभूम्या आं ते सागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महद्यर्णवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षयैलमृदायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे ते सागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामण्णं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो दुरिष्टितं वोचं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्वशु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहेसो ओ मनसायं रुद्रं नमो ओ भेड्देवमसुरं नुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एषजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पानिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं पपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ओ ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः एभ्यो तघोरे एभ्यो घोरघोरतरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूप तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकाय पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः जय
पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयाकार बसु राम सर चाप घना ओम अंजनेया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ज्ञानं समर्पयामि नमः ओम आवाहनं समर्पयामि नमः आसनं समर्पयामि नमः। पाधयोपाधयामि नमः अर्घयोऽर्घयामि नमः। चमनीयं जलं समर्पयामि नमः। सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि नमः। पञ्चामृतमहास्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रौदश सरस्वती तु पञ्चदा स्वदेशे भवत्सरेत पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वदस्पृत्वा तेतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतदस्वेशानो जदन्येनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायां स पुरुषः पादो स विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादुर्दौदैपुरुषः पादो सेहा भवत्पुनः ततो विख्वं विक्रमशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिततपसाद् भूमिमथो पुरः तस्माद्धना सर्वभूतः संभृतां बृहदाजम् पशुस्तस्क्रीवायभ्यनाराण्या ग्राम्यासजे तस्माद्धना सर्वभूतरिचः सामानि जज्निरे छन्दा गुंसि जज्निरे तस्माद्धजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केशो भया दत्तः गावो हजज्निरे तस्मादस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं वरैः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुषं यददुः गतिधाभ्यकल्पयन् मुखाङ्गिमशासेत् किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणो मुखमासेद्बाहुरायण्यः कृतः ऊरु तदसजद्वैसः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शेष्णुर्द्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जैनमतन्वत वसन्तो सासेदाजङ्ग्रेग्म इद्मः शरद्ववेः सप्तशन् परिदयस्त्रेः सप्तसमिदः कृताः देवाय दग्नन् धन्वना अवदन् पुरुषं वसुम जनेन जनामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृताः पृथिव्यैरसा च विस्रकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिदधद्रूपमे तितन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा धूमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिः सरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तदब्रुवन्न जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रीसते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राढिरूपमस्मिनो व्याप्तम् स्नान्निखाण मुम्बई खाण सर्वलोकं मयि खाण हरिः ॐ हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामसम्पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवे श्रीमादेवी सुतां कांसस्मितां हिरण्यप्राकारमार्तां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहो भवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां ससा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामधारां तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यन्तां तं वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तवृच्छदविल्लव तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायन्तरायश्च बाह्यलक्ष्मी उपैतु मां देवसखा कृतिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युं ददातु मे क्षुप्तिपाशमलां ज्येष्ठामलक्ष्मीनाशनाम्यहम् अबोधिसमवृद्धिं च सर्वां निर्गुणमे गृहात् गन्धद्वारां दुर्दाशां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवये श्रियं मनसा काममाकुतिं सत्यमसे महे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पदमानिले आपसृजन्तु निजदानि चक्लितवसमे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावा आर्दाय करणीयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावदस्वसान्भिन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुदाज्यमन्वहं श्रियं पञ्चदशर्चं च श्रीकामं सततं जपेत् पद्मानने पद्मवरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसु पद्माक्षी येन सौख्यलभाम्यहम् अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतें देवीं सर्वकामस्य देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तस्वादिगभीरथां प्रजानां भवति माता युष्मन्दं करोतु मां
धनमग्निर्धनं वायो धनसूर्यो धनं वसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणा धनमस्विनो वैनतेयसमं पिब समं पिबन्तु वृत्रः सोमं धनस सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना न क्रोधो न तमाश्चर्यं न लोभो न सुवामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धर्वमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोघे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसिद्धमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवं प्रियां विष्णुप्रियसखी देवीं नमाजुतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पद्मानने पद्ममिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिय पद्मदलाय दाक्षे विश्वप्रिय विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मयि सन्निधस्तौ आनन्दकर्दमश्रिदा चिक्लेदा विश्रुदारिशयस्त्रपुत्रास श्रीदेवी देवताश्रया श्रीवत्समायुष्यमारोग्यमहाविदाशो मानं मयीयते धान्यं धनं पशुं बहुशान्तिलाभं बहुभक्तिलाभं बहुलक्ष्मीलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापच्युतमृत्तव भयशोकमनस्तापा नश्यन्तो मम सर्वदा ततश्च विरवो साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ति दिशकान्त्यात् विद्युत्सौदामनी यथा ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ हं हनुमतये नमः ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् स्वाहा 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 जय बोले पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। Let's do some chantings of Bhagwan Shivji first, and then we'll start with our Hanumanji Puja this evening. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Nagendra Haraya Trilochanaya Bhasmangaragaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah. O Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. 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 Mandakini Salila Chandan Charchitaya Nandishwar Pramathanath Maheshwaraya Mandar Pushpa Bahuput Supojitaya Tasmai Makaraya Namah Shivaya. Tasmai Makaraya Namah Shivaya. 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 Shivaya Gauri Vadanar Vrinda Suryaya Daksha Dharnashikaya Sri Neelakanthaya Vrishadhvajaya Tasmai Shikaraya Namah Shivaya. Tasmai Shikaraya Namah Shivaya. 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 Namah. वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय. तस्मै वकाराय नमः Shivaya. नमः Shivaya. Namah 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 Shivaya. यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय. Tasmai Yakaraya Namah Shivaya. 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 Namah
देव की जय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यापते शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशवाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। विशालाद्रिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा न सत्बालबालेन्दुकन्ते भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिरानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतु मानाथपादारविन्दं भजन्ते न लोके परिवानराणां तथावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽहं जराजन्मदुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो नमामीश मीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिराकाशवाकाशवासं भजेऽहं। चिराकाशवाकाशवासं भजेऽहं। बोलो उमापति महादेव की। While we finish the Shivji Alankar, today is a special Alankar. Today is Amavasya. So while they're doing that, we will start the chanting of Hanumanji Maharaj Chalisa. And the intent of the Hanumanji Chalisa chanting is, as we chant the Chalisas, at the end of every Chalisa, when we finish Pavanatanaya Sankata Haran Mangala Murati Roop, Ram Lakhan Sita Sahit Hriday Me Basahu Surabhu. Bolo Pansud Hanuman ki, Siyabaj Ramchandra ki. The intent is for you to get up, because it's nice. You get up, you sit down a little bit, you get up, and you go bow to Hanumanji Maharaj. You put a flower, you put a fruit, whatever you have. If not, just go bow to him like this. Take his Ashirvad, and then go back and sit down. If you have fruit, you can put a fruit, flower, you can go sit down back. Whatever it is, we ask you that you participate, because puja is not only a sitting process, it's a participating process, so you must do it.
Why 11 Hanumanji Chalisa? Hanumanji is Shankara Suvan Kesari Nandan. He's the 11th form Shivji Bhagwan. So he comes from power, he comes from simplicity, he comes from purity. So we will chant and ask his blessings on everybody. बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की। बड़े वाला छोटे वाला भी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हारहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। ओ राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिनु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आगे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाले। दस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, रवि गोविंद कहि सके काट। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर बल जान। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माही, जनि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमानो गए तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ में कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, हर दम भजन ज्ञान जोरावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, जीवन फल पावे।
द्वारा, हे प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुरारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन करे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, जो सही बंदी महासुख होई, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भाई प्लीज स्टैंड। श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय श्री राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं
धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामृगगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की। कर्पूर गौरम, एवरीबॉडी, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। नमः शिवाय, नमः शिवाय। Raise your hands, everybody. Om Namah Shivaya. Namah Parvati Pataye. Har 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 Mahadev. Shambho. Atma Tvam Girijamati Sahachara Prana Shariram Griha पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिरा यज्ञ कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोले भवानी शंकर भगवान की, अन्नपूर्ण पार्वती माता की जय, कार्तिकेय सुब्रह्मण्य स्वामी की, महाविघ्न विनाशक गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। शंभो दुर्लभं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातुर्यायुधं नृजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। सांब सदाशिवाय नमः। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की जय। Please be seated, everyone. Om Hanumate Shri Ramadutaye Namah. Om Hanumate Shri Ramadutaye Namah. Om. Jai Sitaram, everyone. Everybody ready for Hanumanji Chalisa? For those of you who just came, we finished one already, so we have 10 more to go. Now you may be wondering,
why is Bhagwan Shivji dressed in white today? Today is Tuesday. But as you know, we dress the lingam according to, the significance of the day. So we'll tell you about that. Welcome to all of you at our Tuesday Hanumanji Chalisa chanting. Since this is going so well, I think for all the Tuesdays until Shraavan is finished, we should have 11 Hanumanji Chalisa chanting. It's very beautiful. You think it's a good idea? Huh? Two, three body shake their head like this, which we can't, I cannot do it without you. I mean, if me sit down here and sing alone, then, Hanumanji give me all the blessings. So we need everybody to sit and chant and take the blessings of Hanumanji 11 times to slay all the negativity in us. Listen, don't let anybody tell you that they're pure. We're all aspiring for that. We are all aspiring every day, working every day to become the best we can be. In the meantime, we have to do everything possible. So if somebody asks you, what are you doing every day to become the best human being or to change? One of the things I'm doing is I'm listening to Hanumanji Chalisa, I'm chanting Hanuman Chalisa. To all the children who are here today, young people who are here today, Hanumanji Chalisa is the oldest song on the planet. Tulsidas is the most famous poet on the planet. And Hanumanji Chalisa is the more powerful song on the planet. Right? Very powerful. That's why it was written by a 17th century saint. We're still singing it in 2023. And we will forever sing it. Because we're passing this down on to our little children for them to understand the greatness in it. Bole Pawan Sutta Hanuman ki. 6 bodies sponsor Hanuman Chalisa today. Huh? According to my spectacle, I have 1, 2, 3, 4, 5. Very good. It's very busy. So we'll, when we get to the last 5, if the people are in the temple, we will ask them to sit in front of Hanumanji. If not, we will keep going. So as we chant the Hanumanji Chalisa, we have 10 more. Let every time you go in front of Hanumanji, you got to ask him to help you to take away something from your life. We don't come here to get anything, you know that, right? We don't come here to get anything from the temple. We don't come here to take anything from the temple. We've come here to take away from us. All right? You know the old story of the Buddha is meditating and whatever, and he doesn't have wealth and he doesn't have anything else. And he was asked that, what have you gained? He says, I've lost everything actually. I have lost in my meditation, I've lost everything. Now people say, what kind of story is this? Why would you want to lose something when you pray and you meditate? And so, what do we lose? We pray and we meditate and we chant to lose our anger, to lose our selfishness, to lose our jealousy, to lose our lustfulness, to lose our procrastination, to lose all these vices. We are praying, Bhagwan, to let us lose our impatience. Let us lose. We're not coming here to gain, right? There is nothing you can gain here. There's nothing to take away. We've come here to lose. When you go back, you must go back lighter. Except when we saw food, you go back heavier physically. But you go back lighter human being. You have relieved yourself, right? When we say, during this period of time, you will hear me saying a lot, Har 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 Mahadeva Shambho. 3 times. What do we ask Bhagwan Shivji? Why do we say 3 times and not 5 and 10 and all these kind of things? The first time we say Har. No? There's Hara and Hari. Har is Shivji. Har Har Har. Prabhu, Kal Har, Kasht Har, Dukh Har. Please take away from us Kal, the fear of time. We're so fearful that time, time represents
fearfulness. We are afraid of what tomorrow brings or what the future brings. We don't even know if there's a tomorrow. Kalahara, kashtahara, kashta, difficulties. Har means to, destroy. Take away our fear of time, of the unknown. Take away our fear of kashta, of difficulties. Dukkahara, of sorrows. Dukh means sorrows. Na? Kalahara, kashtahara, dukkahara, or ek aur daridra, har Mahadev. Poverty, ashtadaridra vinashakalingam. No one wants to suffer from poverty in this life of any kind. So we ask Bhagwan Mahadev for that. Today is Amavasya. And as you pray today, Amavasya is always dedicated to our ancestors, to our beloved ones. Shivji is dressed in the white today, symbolically with a moon or so behind, because Amavasya is for the ancestors. Today is a day that people do Shraavan and so on or at least pray for their ancestors. And it is important for you to do that. As you pray and you sing, please seek the blessings of the Lord to bless all your ancestors as well. So the plan is every time you come, ask the Lord to help you to take something away or to give up something. Give up something. And don't give it up while you're only in front of Hanumanji. You understand? Don't give it up while you're only in front of Hanumanji. Give it up when you're in front of him and when you left his physical presence as well. बोले पवन सुत हनुमान की जय। पलजी आप दरवाजे पे बैठे ना, लोग बाहर जा रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिनु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ भद्र और ध्वजा विराजे काने मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजयवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार गाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई सहस वदन तुम्हरो यश गावे हस गई श्रीपति कंठ लगावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल चाहते कवि कोविद कहि सके कहते तुम उपकार सुजीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर
ताहि मधुर परजान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि जल विरागे अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमालो ग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आप तीनों लोक हाथ पे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित नगरी हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा बोलो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत्रु बार पात कर कोई छूत ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा श्री जयनाथ हृदय महादेवा श्री जयनाथ हृदय महादेवा श्री जयनाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप बोले पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र की You come up now at the end of the Chalisa. Everybody come up, put a flower in the Lord, put a fruit in the Lord. Ask the Lord to help you to take away some sort of vice in your life. By the end of this, we will have 11 less vices, hopefully, when we leave here today, and we'll have stronger voices. Bole Pawan Sutta Hanuman ki Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Guru Charan Saroj Rajan Shri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukhur Sudhar Barno Raghuvar Vimal Jasu Jo Dayak Phalchari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Muhi Harahu Kalesha Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapis Lok Ujagar Ram Dutta Tulit Baradama Anjali Putya Pavan Sutanam Mahavir Vikram Bajrangi Kumut Nivari Sumati Ke Sangi Kanchan Varna Viraj Suvesha Kanal Kunjal Kunjit Kesha हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर
किया, राम लखन सीता वन बसे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजवर दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, कर दिलागे गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमानो गया तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सासु अमित जीवन फल पावे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबल दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट हृदय विजय सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिहाई, जो तुझ पार बात कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यहाँ करे हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेत, कीजे नाथ हृदय महादेव, कीजे नाथ हृदय महादेव, कीजे नाथ हृदय महादेव। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप, सिया भज रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। You gotta go again. You see, you're not gonna get bored. You can't get junjuni. You can't get bored. Your knee can't hurt you. You're gonna keep active today, because every time you're gonna come to Bhagwan Ram. Please remember, when you go to Hanumanji, ask him to transform you and help him to make you a better individual, because you're working on you, not on anything, not on anyone. You're working on you. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. रामचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की. We're praising the one. Okay, let me see if you remember. What are the three most important things you should remember about Hanumanji? Three most important things. Number one, he never failed. Number two, he never left anything incomplete. And number three, he never did anything without Shraavan in his heart. Three things you should never forget about Hanumanji. He never failed. Did he fall though? Did he fall? Of course he fell. Hanumanji fell. Bharat shot him down. You must always remember that you will one day, hopefully not, but you will one day fall. And if you fall in life, think about Hanumanji. You know what Hanumanji was doing? He was carrying the medicine in his hand, the mountain in his hand. He had a whole big mountain to save Lakshman. And Lakshman's brother shot him down. Imagine that, with a blunt arrow. So he was carrying this medicine for Lakshman, and Lakshman's brother shot him down. His brother shot him down. So imagine you're working for Dharma and you're going to be shot down by the closest people. You're going to fall down, but don't worry about it. He fell, but he never failed. That's one. Hanumanji never did anything and left it incomplete. Always completed his work. And thirdly, he never did anything without Ram Bhagwan in his heart. That was the secret of his success. Now, what is success? We'll talk about that a little bit more. Because you want to say that you're successful. What does that mean? Does that mean what you drive, where you work, where you go? What does success mean to people? We'll talk about that. What is the difference in the spiritual realm between growth and success? Right? What's the difference? You're growing, but how are you successful? Shri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghubar Bimal Jasa Jodayak Palchar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesha Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Dinhu Loka Uja Ram Dut Yatulit Baladhama Anjani Putra Pavan Sutanama Mahabir Vikram Vajran Kumate Nivar Sumati Ke Sanchi Kanchal Varana Viraj Suvesha Kalal Kundal Kunchit Kesha Hath Bhadra Aur Bhaja Viraje Kale Moj Jane Usaj Shankar Suvan Kesari Nandan Tej Pratap Mahajagabandhan
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जया भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मोह प्रिया भरत संभाए सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जाना प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल्दी लांग गए अचरज लाए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ टेका भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशक रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुरारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे निजे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नार जो शत बार पाठ कर कोई जो कहीं बंदी महासुख हो जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि जय राखी जय नाथ हृदय महादेव हर की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप सिया भज रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्हो लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी
चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुजीवहि कीन्हा राम मिलाए राज पर दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मुख माही जल्दी रांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समायो आपे तीनों लोक हाथते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सासु मित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष से विनव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देवता चेतन धरहि अनुमत से सर्व सुख करहि संकट
गाते नित्य सब वीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। सोया पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हृदयरा, कीजे नाथ हृदय मारेरा। कीजे नाथ हृदय मारेरा, कीजे नाथ हृदय मारेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की जय। ओम रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। यदुनंदन जय राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे। यदुनंदन जय राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। ओ रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन जय सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। श्रवण सुजसु सुतिया यहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। शांतं शाश्वतं प्रमेय नमघं, निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य निशं, वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं। नान्यस्पृहा रघुपते हृदयास्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्ग निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां मृगगण्यं। सकलगुणनिधानं रानरानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखे तुम भाही, सही दुख कंद मूल फल खाही। बोले पवन सुत हनुमान की जय। What is growth? Growth.
But you know what growth is? You're experiencing growth. Think about from all perspectives. What is growth? There's a difference between growth, progress, and success. Someone tells you you're growing. You know, you have a business, you have a budget, you have a congregation, whatever. You're growing. It means a lot of things. Then if somebody tells you you're making progress, what is the difference between progress and growth? And then lastly, you say you are success. You are successful. There's a big difference. Now we'll talk about one. One is called growth. Growth is when you're simply expanding. It doesn't matter how. Growth. Your business is expanding. You have more customers. No matter how, just think about this for now. Growth simply means expanding by every, any, and all means. Every, any, and all means. That means growth. More customers are coming, more devotees are coming, more word is going, you're becoming whatever, your bank account, that is growth. Your asset portfolio, those of you who are investing, our Guyanese people know more investment than the bankers know. I've been working in the bank for 25 years. I can tell you this, Guyanese people are the greatest bankers ever. They know about banking and investment more than everything else. I'm telling you this is why West Indian people come in this country and they do so well. Because they know that when they work a little bit, they have to put away a little bit, they have to spend a little bit. Dharma, Artha, Kama, Moksha, 4 ways you have to, anyways. You know you have to spend a little bit, you know you have to invest a little bit. And they get to get the highest interest rate and things like that. They are the greatest. I never did personal banking, like lend money and things like that. I'm a technology guy. But I know it all. We are great people where growth is concerned. We don't care how we grow, but we want to grow. Growth is important for everybody. But how we grow is the next phase. We'll talk about that just now. This Hanumanji Chalisa is dedicated to Raj and Devi Maharaj, devotees of our temple, and my family as well. Not pumpkin vine family, real family. Raj and Devi Maharaj, Raj and I are close relatives by blood, and today is their 31st wedding anniversary. Please give a big hand for them, Raj and Devi. And today we want to wish them happy 31st wedding anniversary. This is coming from their daughter Lena and their son Parvesh, and of course their son-in-law and so on. Dad and Mom, you are both constant source of love, inspiration, and youthfulness that we all look up to. We wish you many more years of love, joy, and companionship. May Bhagavan, Shiva, and Hanumanji continue to bless you with many more happy and healthy years. With love from your children Parvesh, Lena, and Ajay. Best wishes from Mama and all your family and friends. And this message was sent, of course, by Lena. So thank you for reaching out to us, Lena. I hope Raj and Devi are listening to this program or will listen to it. We send you the blessings of Hanumanji. And they are very, very lovely people who have worked tirelessly, by the way, to build this temple. Many, many simple. One of the beautiful things of our temple is built by simple, down-to-earth people. Simple people. And they are among those simple people who work tremendously hard with us and who still do as well. We want to wish them both happy, blessed 31st wedding anniversary, and may you live to see many more lifetimes together. This Hanumanji Chalisa is dedicated to both of you, and of course to all of you who are here as well. Bole Pawan Sudha Hanuman ki jai. This is number 6. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Bimal Jasu Jodayak Phalchar
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हारहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंत जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जग दिनांगी गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत में जेते सुगमानो ग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाथे में कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे तासु
जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न करही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे बीते सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार बात कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, ओए सेठ साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महादेव, कीजय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की, सियाभज रामचंद्र की जय। And the next Hanumanji Chalisa, while you're coming up here, is dedicated to as well to Devi's sister, Usha. So happy 31st anniversary as well to Prem and Usha. May Bhagwan Shivji and Hanumanji continue to shower their blessings, keeping you both healthy and happy always. Best wishes from your children, Mama, and your family and friends. Happy, happy, blessed anniversary. I guess we're celebrating twin anniversaries here. You're not twins, but same day, of course. So we send you the blessings of Hanumanji Maharaj and Shivji Bhagwan. Bole Pawan Sutta Hanuman ki jai. Shri Guru Charana Saroj Raja, Nij Man Mukur Sudhar. Barno Raghuvar Bimal Jasu, Jodayak Phal Char. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि, हरहु कलेश विचार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिनु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु शरत सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की भी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत संभाई। सहस बदन तुम रोयश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाई। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव की, राम दिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम
राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनते सारे समस्त लय तुम्हारी शरण तुम रक्षण काहू को दया आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सासु अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम गोपाल जन्म जन्म के तुम बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तंजन हनुमत से सर्व सुख करनी संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमिरे हनुमत बल की बोलो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार बात करे कोई जो कई बंदी महासुख होय कृपया पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप सिया भज रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। ओम जामवंत के वचन सुहाई सुनु हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख संकंद मूल फल खाई जब लगी आवे सीत ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन कहु माता चले हर्षि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतुक कूर चरे उताऊ पर बार बार रघुबीर संहारी तर के उपवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देह हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भाते चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी हे मैं नाक होई क्षमहारी हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम आहिन के माता पत नहीं आई कहीं ते ही बाता आज सुरन मोहि दीन हारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज करे फिर मैं आवो सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो तब तब वदन पैति हऊ आई सत्य कहू मोहि जान दे माई कवने हूँ जटन देई नहीं जाना ग्रस सन मोहि कहे हनुमाना जो जन भरिते ही बदन पसारा कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा 16 योजन मुक्ते थयऊ तुरत पवन सुत 32 भयहु जस जस सुरसा बदनु बरावा तासु दूत कपि रूप दिखावा सतयोजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैथि पुनि बाहिर आवा मागा विदा ताहि सिरुनावा
सुरन जेही लागी पथावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गए उसो हर्षि चले हो हनुमान। बोले पवन सुत हनुमान की जय। Next Hanumanji Chalisa, Asha sponsored this on behalf of her family, Asha Tilak and her family. She's probably somewhere at the back, but we asked Bhagwan Hanumanji to bless her and her entire family. They are devotees of Hanumanji, and I've always looked at him for strength and guidance at all times. Growth. What is growth? Accumulation and accumulation, and you grow. It doesn't matter. It doesn't matter how. It does not matter how, but you're growing, right? Progress is when you are growing ethically. Do you understand? Progress means you're expanding, you're growing, but you're doing so ethically. It means you're not growing your business by stealing people's money. Not everybody who come in the mechanic shop will need a new part. Maybe that one can be repaired. You know what I'm talking about? Not everything has to be about, getting a new, it has to be ethical. So progress is when you're growing, but you're doing it honestly. This is our teachings. You must do it honestly. Now that means your growth may be less, or your growth may not be as other people's, but at least it is progress. Progress is way better than growth. It means you are an ethical person, you're a kind person, at the same time you're generous, and you know that whatever you have, even if it's a majira that you have, alone, you have earned it ethically. You did not steal anybody's money, you did not rob anybody, you did so ethically. That is how Hindus live. And that is why people leave, you all know this? Blue chip CEO companies, they leave the West. And you know what they do? They go to places like India, in the caves of the saints and the sadhus, to talk to them about how to find peace. What is the secret for peace? What is the secret for peace? Because many of them are not peaceful, many of them will sleep. But these men and women who live a progressive life, it means that whatever they earn, if they earn one meal, they earned it ethically. If they have one piece of clothing, which in most cases is the best thing, not in North America though, they earned it ethically. They go to sleep at night and they know that they have finished their day, they did their business, they talk to people, they serve the temple, and they have done so ethically without robbing anybody. That is called progress in life. So growth, the first stage is when you accumulate, you don't care how you do it. You rob people, you take people, by any means. Growth is when you do so. Progress is when you do so with ethics. And it is much better to do everything, every single thing, do it to the best of your ability ethically. You will sleep well and you enjoy a lot of peace. You may not be as others are, but you'll be much more peaceful. Let's dedicate this Hanumanji Chalisa to Asha and her family, who are servants of our temple. This is the family known for their love for Hanumanji Maharaj, and I've always found strength at his feet. We ask Hanumanji to continue to bless them so that they may continue to draw strength and courage from his feet, and may they always be inspired by Hanumanji Maharaj. We also send blessings to Auntie Data in Florida, who is also an ardent follower of Hanumanji Maharaj, and to all her children, all the grandchildren, everybody else who are listening. On behalf of Asha and her family, we send all of you the blessings of Hanumanji Maharaj. May the Lord continue to bless them and protect them always. Sri Nizare Mare Pamare Nire Sam
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिरु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा ओ अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सहकारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुमेध कीना राम मिलाए राज कर दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु वीर्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिवांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम लोग तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा मिलते सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ में कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जी के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई
युग प्रताप तुम्हारा, है करो सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के सिमरत वारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सरार हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त आए। और देवता चित्र धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूत ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साची गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। That is dedicated to Asha Tilak and her family, wishing them Bhagwan's blessings. The next Hanumanji Chalisa from Auntie Lalita and Uncle Bhims, giving thanks of course to our entire team here at Bhavani Shankar Mandir for always bringing the best of Kirtan, Sankirtan, Bhajans and Pujas of course. Thank you very much Auntie Lalita and Uncle Bhims for your dedication tonight, and we pray that Bhagwan Hanumanji always bless both of you and your entire family as well for being devoted servants and devotees of our Dharma and our temple as well. Hope you're well with your family. हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हारहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिरु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान
काज करिबे को आत प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की लीला बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सहस बदन तुम्हरो यश गावे हंस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कह सके कहा तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पर दीन्हा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भान लीलो ताहि मधुर पर जान प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मारी जल्दी लांघे अचल चलान दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे देते हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान राम कुवारे तुम रखवारे हो आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को धर आपन तेज समारो आके तीनों लोक हाथ देगा और भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान नासै रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे हर बचन ज्ञान जोदान सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम जान और मनोरथ जो कोई लावे सासु अमित जीवन फल पावे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान चारों युग प्रताप तुम्हारा हे पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी मां राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चिंतन धरनी हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार बात कर कोई जूते ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा
की जय नाथ हृदय मांझेरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। How many chalisas did we just complete there? Mango you bring? Or banana? We finished 9 there? So you're offering now the 9th mango there, right? All right, come. We get 2 more. Shri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghubar Bimal Jaso Jodayak Palchar Buddhihin Tanujanike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Muhi Harahu Kalesha Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Tinhu Loka Ujagar Ramadut Advit Baladhama Mahavir Vikram Bajrangi कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के हर हाथ भद्र और ध्वजा विराजे काने मूर्ध जुने उसावे शंकर सुमन केसरी नंदन जय प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आत प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मोहिया भरत संभाय सहस्र तुम रोय गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुखी दई की राम निराय राज पर दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु नीरो ताई मधुर पर जान प्रभु मोदिका मेरे मुख माही जल्दी रांग गए अजर जलाई दुर्गम काज जगत के जेते सुमनो के सुमने थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न गया बिन पैसारे अब सुध रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को है आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हाथ पे काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रहे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन को वज्र ज्ञान जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सासु जीवन फल पाए चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिचित जगत जियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकट राम दुलारी अष्टसिद्धि रमण के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तर रहेगी हनुमत से ही सर्व सुख है संकट कटल मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान साई कृपा करो गुरुदेव की राय जो सुख पाल पात कर कोई छूटे बंदी मास को तो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी तुलसीदास सदा हरि मेरा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की जय। The last Hanumanji Chalisa is now dedicated to giving thanks to Bhagwan Shiva for his blessings on our family. And this is from Suresh, Premwati, Trishna and Rajan on the special day of our wedding anniversary. Om Namah Shivaya. So happy anniversary to you. Bhagwan's blessings to all of you as a family. And it's nice that we can give thanks and prayers
on the day of your anniversary. God bless you and stay healthy, stay happy. Bole Pawan Sudha Hanuman ki jai. Nischarai ka sindhu maharahi karimaya nabuke ka gagahi जीव संतु ते गगन चला उड़ाए जल विलोकी तिनके परिछाई गए ऊंचाई जक जोन उड़ाई एहि निद सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपतु कपि तुरत ही चीन्हा ताहि मारी मारुत सुत बीरा पार दीपार गयऊ मति धीरा तहा जाई देखी मन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाई अगमृग वृंद देखी मन भाई शैल विशाल देखी कि आगे तापर धाई चले उभय त्यागे मान कछु कब के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिर पर चरी लंका ते ही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति तंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुबत भीति चार पुर बहु विधि बना बोले सियापति रामचंद्र भगवान की. So there is growth, which is acquiring, just acquiring and growing. No matter how, there is progress, which is doing it ethically, and there is success. Success means you are doing it ethically, but you're doing it with God in your heart. You're doing it spiritually. It means that every work that you do, yes, you're doing it ethically, following the law, following the rules and everything, but you're also doing it as an offering to God. That is called success. Success is truly any person, man, woman, or otherwise, who have a heart. Now, what is success to people? For some people, success means a degree from a university. Great. For some people, success means a devotee from a very recognized Ivy League university. That is success too. For some people, success means a good job. That is success too. For other people, success means peace. Success means I have achieved little or lot in life, but I've done so ethically, and I've done so with God by my side. Now, there's a lot of people who claim I'm successful, you're successful, they're successful, but in their life there is no presence of Bhagwan. There is not even a tinge of God in their lives. This is not a negative comment on anyone like that. It is just an observation to let you know. Success means achieving what everyone, you see these children, I'm always very proud of them. And BSM kids and all the Mandir kids I'm always very proud of, because when they achieve something in life, that is called success. Children meet me all the time, but I can't send the children to school. Parents meet me all the time. The children can't come to school because they get homework, they're at school, this and that and the other. I say, okay. Oh, my children get first graduation with honors. I said, good. All the children need graduation with honors too. All of them. They do well in school. They're going to universities and so on, some of them. Most of them are under 18 years. This is just a few of them. You all know them. The difference between a kid who doesn't involve in the dharma, in their culture, in their spirituality, in their craft, in their art, and these children is that they are success. That's called success. Everybody else is progress. This is not an insult on anybody. This is how it is.
because they are all graduating with honors and top of the class and all these kind of things, and they still serve their dharma. They still sing Hanumanji on a Tuesday afternoon, and when summer is almost at the end. I know that's not a pleasant thing for many of them, but they're here singing Hanumanji Chalisa with us. That's a lot of blessing. And they're ready for school, starting whenever school starts for them. Bhagavan must always bless them with education and knowledge. That is success in life. All of you, this, the crowd here is bigger than a Sunday morning service now. I think next week we should cook some bhojan. I don't know about you, but I think we should cook some bhojan next week. We have to talk to the right people. Make sure that, Hanumanji doesn't fast. When you're fasting for Hanumanji, you have to eat all bhojan. So maybe next week, just planting a seed, we should actually prepare some bhojan and cook it, because the Tuesday crowd is a nice crowd. You'll come back next week and we'll do something very nice next week for Hanumanji, because following week Tuesday, or whenever that is, we have our Bhagavad Katha starting. I want to talk a little bit about that, not a lot. So growth, progress, success. Our Bhagavad Katha starts on the 30th of August, to September 5th. We are so close to actually doing it outside. We're confirming the tent details today. We have to rent the tent. So by tomorrow we'll get the confirmation on the tent. But we're almost close to doing it outside, which means preparation, beautiful outdoor event, stage, people sit nicely, enjoy the outdoors. Not that the temple is not nice, but this is old-time story. So I'm inviting the entire public to come and to join with us Bhagavad Katha. Nimnaganam yatha ganga devanam machyutayutam vaishnavanam yatha shambho purananam idam tatha. Nimnaganam yatha ganga, just like there is no other river as pure and powerful as the Ganga. Nimnaganam yatha ganga devanam achyutayutam, just like there is no unique devata as Achyuta Krishna. Vaishnavanam yata shambho, just like there is no Vaishnava as great as Shiva. Purananam idam tatha, there is no other Purana as great as the Bhagavad Purana. There is no other like it, rather. It is such a unique thing. And the Puran, when the Purana is read, the Bhagavad Purana, that is the presence of Shri Krishna himself. That is not a Panditji telling you. It's the presence of Shri Krishna. So it's a plan to do it outside, make a nice big tent, lots of space, cater for rain, cater for thunder, cater for cold, everything. And to let all of you come and enjoy Bhagavad Katha outside, nighttime after. Every night there will be bhojan for everybody. What I would like to ask you though, is to sponsor a night of Katha. There's a cost for everything, To become a sponsor, the cost of to doing that is $500. We provide you with puja, sarjam and thing. The cost is $500. I know things are tough with people, but we know where we're spending our money. And Mandir is not a place that people spend a lot of money these days, because I sometimes wonder how things are bad. Y'all know this story? Y'all know Taylor Swift is coming to Canada next year? Everybody know that? Taylor Swift is coming to Canada next year. You see some people smile. 6 shows only in Canada. Auntie Kama, you don't know who Taylor Swift. Why you ask Auntie Chandra who named Taylor Swift for? Many think you know who named Taylor Swift. Auntie Chandra, you don't know who named Taylor Swift. Grandma, you don't know who named Taylor Swift too. Right? I think this generation said, I'm trying to find out who named Taylor Swift. Right? They don't know who named Taylor Swift. All the people who laugh, I know who Taylor Swift. 6 shows only in Canada. You know what entire Toronto is doing right now? The Ontario government and Toronto is doing right now? They're replanning the whole city arrangements, the hoteling, the flights. To get a hotel for that point in time, the prices are going to be sky high to stay in Toronto. People are flying from all across the world to come see 6 shows only in Canada. Next year, November. Now let me give you the highlight of it. To get a ticket, you have to be qualified to buy a ticket. People are going to be paying
up to $25,000 to get a backstage ticket and a upside ticket for Taylor Swift. And you know the challenge in that? There's a lineup to get those tickets. So how can things be bad? And you can see how much happy Guyanese people go there. Right? Apparently, I don't know who, I know she's a very popular, obviously a very popular person. And I think she's one of the decent ones, but she's very, very popular for people that pay that kind of money to go see Taylor Swift. And you have to be in a waiting queue. And if your queue pass, somebody else get your number, you're gone. I wonder how I know all of this. I wonder how I know all of this, right? So anyways, 6 shows is going to be sold out. You can't get tickets if you're not qualified to buy a ticket. Can't we buy a ticket for $500 to experience Krishna? How much has the Lord given us in life? Right? You see what I have to do? I have to trip people into guilt in order to sponsor something at this temple. I have to make them feel guilty in order to sponsor something at this temple, because we spend our money on everything else and we give a little back to God. All of you got friends and things. You see our certain faith, they have a percentage of their earnings that they give to their church. Hey, heard that? This is my percentage of earnings every month. I give it to my church. I'm a devotee there. I'm a servant there. That is my church. I give it to my church, my mosque, the Hindu temple. If anything left, we will give them. If anything left, it means we're getting the crumbs, right? And everything that happens here is my responsibility. We have nice treasurer, nice secretary, nice people cleaning up the building and so on. But when it comes to paying the bills at this temple, it all falls on one person. And next year is going to be a very different year for us. But I'm not worried that next year, mortgage got to renew next year, so you know what that means. But I think that we have to rise to this Bhagavad Katha. I would like to see us having multiple sponsors every evening. People should be having a waiting list to sponsor Bhagavad Katha. A waiting list. But we're waiting to pay $25,000 to Taylor Swift. Right? There's got to be something you're celebrating. You're alive. You're thankful. Right? Become a sponsor. What does that mean? It means you're going to be present the day. Now, if we have 4 sponsors, it's becoming a challenge, because 4 Bedi and 4 Ganesh Puja and 4 Kalash Puja. And I go to other temples and they have 10 sponsors. Big families. And they just have 1 Ganesh Murti, 1 Bhagwan Krishna Murti, 1 everything. Hey, we get 10 Bedi. Huh? You don't see that anywhere else. We have really not spoiled, treat people well. But anyways, and you know what they all do? They sat together as a big group. They sat with their Indian clothing and they're praying. The Panditji does the puja, give all them flowers, they sit together and they offer flowers, they offer the prasad. They're just present there as a sponsor for that evening. We should have that stuff. And everybody invite their families. Auntie Kamal, Taylor Swift? You'll do the first night. You see, and she's a pensioner. She's a pensioner. And I know a lot of things about Auntie Kamal because I've been around her. She's a pensioner. She got no other income other than what the old age security and the pension gives to her, which is not a lot in this country. The refugees get more than them, right? The people who come in from this country with nothing, who have done nothing for this government and this country, they get more than they do. And she will be the first sponsor of the. We have to clap for her. We have to clap for her. Because there isn't a satsang that goes on here and she is not part of it in the way she should. God must bless her always for that. So I'd like to see a waiting list. You go do 1, 2? Very good. Well, we already done your details. Must go ahead. Okay. 1, 2, 3. There we go. We got 3 sponsors. Auntie baby? Oh, Janmashtami night. Okay, good. So Janmashtami night, we got 3 by there done. There we go. We should have a waiting list for this thing.
But I'm sure it's going to go very fast, and I'm sure we're going to have multiple. $500 is the Bojan car is about a lot more than that to make, plus the gas, plus the AC. But that's not the point. Let's have a beautiful Janmashtami, outdoors, tent. Dress up. I would like our Hindu people to the ladies to start ironing their saris from now. On your shalwar, put first day, second day, whatever it is. The men should always be excited. They only can kurta pants to come. They should all be excited. Janmashtami is coming 7 days before Bhagavad Katha. So that is my spiel tonight. I'm going to continue to trip you into guilt until you're sold. But that's what I'm going to do. That's my job here. To really bring you close to God and to make you feel happy about it. Today as well, before we conclude, I would like to wish our Bharatiya people and our lovely Mother India Shubh Swatantra Divas. Please clap. That means Happy Independent Day. आप लोग इंडिया से है ना? शुभ स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्र दिवस. Today is the 72nd. Is it 72? How many years since independence in India? 77. 77 India independence. 77 years ago, that country had gained independence. I'd like to take a minute to talk about this. Because everybody goes to India and say, oh, India is poverty, India is this, and India is that, and India is this. Do you expect that over 800 years of terror, of cruelty, of robbing that country of its riches can be repaired in just 77 years? It can't. Today, Murari Babu, today only, Murari Babu, आप लोग जानते हैं मुरारी बाबू कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कथाकार, रामायण कथाकार. Today in the Oxford University, or university in England, today on independence in England, at one of the highest universities in this world, he read Ram Katha. Ram Katha. That's not all. That's not all. You know who was present there for the Ram Katha in the country who seized India 77 years, freed India 77 years ago? The highest office in the country of Great Britain. The Prime Minister was present for Ram Katha in England today in the presence of Murari Bapu. And you know what he had to do to that Indian man? Well, the Prime Minister of India is an Indian. Sorry, the Prime Minister of England, Rishi Sunak, is an Indian, and of course he is a Hindu. He said today that Hanumanji, he has a gold Hanumanji in his desk. He says Hanumanji teaches him how to overcome his difficulties. Where would anybody have thought about that 77 years ago? That England would be bowing, the head of state of England would be bowing to a sadhu who wears cotton, who is physically frail. This is the power and the strength of Bharat Desh. This is the only country in the world that we called Bharat Mata. You never hear anybody say Canada Mata or United States Mata or Mother States. We say Mother India. India has brought us what? India has brought us Bhagwan. India has brought us Bhagwan. India has brought us Satya Sanatan Dharma. India has brought us the greatest culture on this planet. India has brought us yoga. Huh? You all know where yoga come from? India, yes. It may be strange to know that yoga comes from India because the West is going to India and come back to teach us about yoga. And they teach us to say namaste. And we have to say namaste. We have to learn to say namaste from the West who go to Rishikesh and Coimbatore to learn yoga and bring it to us. Right?
India has brought us our beautiful dress. Look at how we are dressing. India has brought us dharma. India has brought us spirituality. It's the only place in the world where we can call it a land of spirituality. Nowhere else you can go. Have you ever all seen a movie with Julia Roberts called Eat, Pray, and what? Anybody know? Anybody? I forgot the movie name. Eat, Pray, Love? Something like that. Good. When it was time, she had 3 phases in this movie. To eat, to pray, and to, is it love? Okay, love. Is it? Okay, eat, pray, love. Her first phase is to eat. Where did she go which country did she go to eat? Italy. She went and she ate all the pizzas and the pastas and all the Western food. Eat, 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 eat. Because that's what they do there. They feed you. When it was time to pray, which country did she go to? Which country did she go to? India. Not America, not China, not Russia. She went to India to pray because it's a land of prayers. Land of prayers. So before we go to India, listen, I was born in Guyana. I grew up in Guyana, and as of recently, I lived most of my life in Canada. Most people here were born in the West Indies. You're living in Canada. But we are practicing the most ancient customs ever that came from India to the West Indies and back here. And we are doing a great job at it. So the next time you go to India and you see things that are unpleasant, don't think that changes can happen in a few days to repair the torment of over 700 years by all of the people who went in India and took away its riches. The Kohinoor diamond, you all know the Kohinoor diamond? You know about that? You know where it came from? Good. Recently, in Narendra Modi's government, in England had to return a very prestigious Nataraj statue which England stole from India. Narendra Modi is a very good prime minister. I'm not a politician, but he has brought Hinduism to its feet in that country. If you go to Kashi now and see the cleanliness of Kashi, because that's where I go, if you see the cleanliness of Kashi, Varanasi, or Banaras as the West called it, that's another thing. We have westernized the whole thing, right? If you see the condition of Kashi now, you'll be stunned to see the development in the religious places. The religious places of India, of course, many of them are filthy, but they're getting better with his leadership. What has the West done to India? It's changed everything, and it's also changed up the name, right? Everybody call Banaras now. We're going to Banaras. Varanasi, Banaras. People are going to Bombay. Bombay is the West name. Mumbai, right? Delhi, right? Delhi, right? Himalayas. What is Himalayas? Himalaya. Ganges. No? Ganga. Ganga has become Ganges. Ganga, right? And of course, Bharat has become India. But this is the beautiful land. When I was going to classical music, the very first raga I learned was Rag Yaman. And my Guruji taught me a very beautiful raga, and it was Ni re ga pare, pa ni re ga re ni re sa. Jai jai janamu bhumi aru janani. Jai jai janamu bhumi aru janani. पावन है ते भारत अवनी.
जय जय जन्म भूमि अरु जननी, शांति एक की शक्ति दो करवर, पावन है तू पावत जननी। जय जय जन्म भूमि अरु जननी। ये हमारा मातृभूमि है, मदर इंडिया। I pray that may India continue to become strong. May Bharat Mata continue to nourish everyone who still are connected to it in some way. And never forget, all of us here have roots and are connected to Bharat Mata. Bole Bharat Mata ki. Last Hanumanji Chalisa, last one, right? And then Arti. Straight we go to Arti. Shri Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukur Sudhar, Barno Raghuvar Bimal Jasu, Jodayak Phalchar. Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar, Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi Harhu Kalesh Vikar. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिनु लोक उधार। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वदन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कान्हे मूँज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति जात, राम काज करिबे को आस। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि लांघि के अचरज लाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, भूखिल आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी चलना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ
भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पावन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की जय। Please come your last one. Please remember, this is your karma phala. These are your fruits of your karma you're offering to the Lord's. Your habits that you want the Lord to help you with. Let the Lord elevate you. After this, we'll go straight into RT. Let's have RT ready for this evening as well. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृचानुं ज्ञानिनां मृगगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयोतमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर गावे रोग दोष जाके कैसे न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पधारे लंका जारी सिया सुध लाए। लंक सुकोप समुद्र सिधाए जात पवन सुत बारन लाए। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी सुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कैसी कतार तोरी चमकारे अहि राम निरी भुजा उखारे। बारे भुजा सुर संहारे दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं
हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं सरसा नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वसार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरणेश्वरी माता दुर्गा की, सरस्वती माता की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगौ शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सुशान्तिर्भवतु। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि।